अरे खींच गया। Of the Bombay Natural History Society, the Haryana Forest Department, and the Government of India. It was established in September 2001 with the objective to save the three critically endangered tip species of vultures, the whitebacks, the longbills, and the hornbills from looming extinction. It is situated at the edge of the Veer Shikarka Wildlife Sanctuary, 25 kilometers north of Chandigarh, and spreads over 5 acres of land. Till the early 90s, there were an estimated 40 million Gibbs vultures in India. Within a short span of 20 years, the population has crashed by 99.9%. The culprit behind this staggering decline is a veterinary painkiller called diclofenac. Diclofenac is given to cattle to alleviate pain and inflammation. When vultures feed on cattle that have died within 72 hours of diclofenac administration, they die of kidney failure. As a result, today only a few thousand vultures soar in the Indian sky. The Vulture Center is home to some of these last remaining vultures. These have been captured from all over the country, ensuring a genetically viable population. Before introducing them to the breeding program, they are quarantined for 45 days and their health is monitored to ensure they are free of diseases. The quarantine aviaries are located 5 kilometers south of the center. Once they have been confirmed to be healthy, the birds are given a unique identity number. Thereafter, they are microchipped and all their measurements are noted. At the center, the adult and the subadult birds are housed in the following aviaries, the juveniles in the holding aviaries and the nestlings in the nursery aviaries. Housing is the most important component of the breeding program. The aviaries are well ventilated. The roof has two nettings, the top one being welded iron mesh to prevent leopards and monkeys from coming in, and a nylon netting below to prevent the birds from colliding with the iron mesh and getting hurt. Concrete ledges as well as nest cots with jute weaving in the middle are provided for the vultures to rest and breathe. Perches are bound with coconut ropes. Vultures never hunt or kill. They feed only on dead animals and that's how they keep our environment clean. At the center, they are provided with goat carcasses of animals which were kept with us for 7 days to ensure that they were free of diclofenac. They are fed twice a week such that each vulture gets 2 kilos per turn. Being social birds, they all feed together. Like feeding, bathing is also a social activity. Vultures love to take bath and especially after feeding. The water troughs are freshly topped every day, changed every 3rd day, and the trough is changed every 7th day to prevent algal growth. During summers, vultures can be seen resting near the water troughs to cool themselves. Vultures, being social by nature, live in flocks and all their activities are synchronized. Whenever the sun is shining bright, they all spread their wings to shed their ectoparasites and to maintain thermoregulation. They preen themselves to keep their plumage organized and shiny.
sunning, preening, shuffling help to keep their wings in shape. With every gush of wind, they flap their wings vigorously to keep their pectoral muscles in shape. If they are able to do this, then they will have no problems in flying when they are released in the wild. Nesting at the center is just as in the wild, extending from September to April every year. Pairing starts as soon as they are 3 years of age. The male is observed offering a green twig to the female. If she accepts, they become a pair. Vultures pair for life. Thereafter, the pair spends most of the time on the nest. Nest material is provided in the aviary from the month of September onwards. Twigs from local trees, green leaves, and grass are all provided every week throughout the breeding season. Both birds participate equally in building the nest. Male and female vultures cannot be visually differentiated. At the center, DNA analysis helps to identify the sex of the bird. Vultures mate throughout the year to strengthen their bonding, but the frequency increases during the breeding season. Egg-laying period extends from approximately November to January. Vultures usually lay at dawn or dusk. The female is observed standing while laying. This amazing moment could be captured due to CCTV cameras placed in all the aviaries. Vultures generally lay one egg per year, but like raptors, they do recycle if their first egg is lost at an early stage. Taking advantage of this, the vulture program has initiated artificial incubation to increase their productivity. The egg is placed in a strong cardboard box with thick padding of sterilized cotton to avoid germs which could be harmful to the developing embryo. It is taken to a thermocontrolled room maintained at a temperature between 19 to 21 degrees centigrade, where it is first weighed to establish an appropriate weight loss trend for a successful hatching and candled to check the stage of embryonic development. It is then placed in the tabletop octagon incubators running between 36.3 to 36.9 degrees centigrade and humidity as low as possible. The incubators can hold 4 vulture eggs at a time and turns on its cradle every hour. The eggs are also turned manually along the long axis 3 times a day to provide even temperature on all sides for a normal growth of the embryo. The egg hatches after approximately 55 days of incubation. The hatchling is fed 12 hours after hatching with 2 grams of goat meat 3 times a day. Weight of the chick is monitored closely. It is given small portions of different organs, muscles, and also crushed bones. Probiotic, calcium supplement, and pure calcium carbonate is given with each meal. The chick is kept out in the sun after 3 days for half an hour and the duration is increased every day. ये एक ऐसी प्रजाति जटायु जो लगातार हम देख भी रहे थे कि विलुप्त हो रही थी। इस संरक्षण के लिए जो पिछले दिनों में कार्य किए गए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस अवसर के ऊपर हमारे सरकार के मंत्री नरवीर जी, कालका से हमारे विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण जी और हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक विनीत कुमार गर्ग जी और हमारे जो HNMS के हमारे BNH NHS के हमारे किशोर जी पिछले दिनों से हरियाणा के साथ मिलकर के
वो कार्य कर रहे हैं और इस प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने उनकी जो भी बाइट्स दिखाई भी है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने देखी है, उसके माध्यम से किस प्रकार से कार्य उनके संरक्षण, उनके प्रजनन को हम सुरक्षित करते हुए बचा रहे हैं। ये ऐसा हमारी इस प्रकृति में एक ऐसा पक्षी जो अगर हम देखें 90 के दशक में करोड़ों की संख्या में ये पक्षी थे और जो हमारा वातावरण है उस वातावरण के संतुलन को बनाते हुए उसको संरक्षित करने का काम ये करते थे। परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या वो कम होती चली गई और देखते ही देखते इतनी कम ये हुई है कि ये लगभग बहुत लाखों की संख्या में ये दिखाई देने लगे और उससे प्रकृति का भी ये संतुलन वो खराब होता है। हम अगर प्रकृति से कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं न कहीं उसका असर मानव के शरीर के ऊपर पड़ता है और जब मानव शरीर के ऊपर पड़ता है तो कई प्रकार के अकस्मात बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं और जब वो जन्म लेती हैं तो उसका अंतिम वो मनुष्य को ही उसका असर पड़ता है, मानवता पे ही असर पड़ता है। मुझे खुशी है कि जटायु के 25 वंशजों को आज खुले आकाश में छोड़े जाने के अवसर पर इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि पीछे भी इस कार्यक्रम को यहाँ से छोड़ा गया और अब लगातार ये बढ़ रहा है। जो हम इस कार्यक्रम को गिद्ध वापसी का कार्यक्रम भी इसको जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खुले आकाश में हमारी प्रकृति में गिद्धों का ये वास रहता है और घूमते हैं। इनका यही ही स्थान है जिस स्थान के ऊपर हमारे ये गिद्ध रहते थे, घूमते रहते थे आकाश में, हम देखते भी हैं और उनकी बहुत हाइट के ऊपर तक ये घूमते रहते थे। जैसा अभी बताया भी है कि अगर कोई इस प्रकार का चाहे जंगल में है और चाहे गांव के अंदर कोई पशु चला जाता था और गांव के लोग एक स्थान पे उनको छोड़ते थे, परंतु उसको स्थान को स्वच्छ रखना ये इन गिद्धों का कार्य उसको पूर्ण रूप से वो करते थे और हम देखते थे भी उससे कई बीमारियां भी वो नहीं फैलती थी, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने में इनकी बड़ी एक भूमिका होती थी। जटायु जैसा अभी बताया भी है, ये पक्षी हमारी संस्कृति का जाना माना नाम भी है और बताया भी है कि जैसे रामायण के अंदर सीता हरण के समय रावण से युद्ध करने में भी जटायु की वो भूमिका रही है और इसके भाई संपाति जिन्होंने माता सीता का भी पता लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भगवान श्री राम के साथ की है। और मुझे जैसा जानकारी भी लगी है कि पिछले 2016 में इसी स्थान से 8 गिद्धों को छोड़ा गया था, 8 जटायु को छोड़ा गया था। इसके अलावा 20
और गिद्धों को भी, जो टाइगर रिजर्व में 20 गिद्धों को भी वहां छोड़ा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे पिंजौर में जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, इसमें कई प्रकार के हमारे ये गिद्ध, जैसे सफेद पीठ के गिद्ध, पतली चोंच और लंबी चोंच के गिद्ध प्रजाति का यहाँ सफल प्रजनन किया गया है। ये हमारा जो